ionization enthalpy. So all of you, what is ionization enthalpy? What is ionization enthalpy, all of you? The amount of energy required to remove one electron from an isolated gaseous atom. Yes, so energy required to remove electron from outermost shell in isolated gaseous atom. So down the group, in all group, 16, 17, 18, down the group, what happens? Number of shells increases, all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Increases. Ionization enthalpy decreases. Screening effect increases. Force of attraction between protons and electrons increases, and therefore energy required. मैम Yes. स्क्रीनिंग इफेक्ट हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज ना. Yes. सब लोग ध्यान दो यहाँ पे. Energy required to remove electron will also decrease, and ionization enthalpy will decrease. Okay, this is applicable for all groups. And now when we go from left to right, what happens? Nuclear charge increases, atomic size decreases, force of attraction between protons and electrons increases. So energy required will be more and ionization enthalpy will be more. Correct. Good. So nuclear charge increase, therefore size decreases. Size decrease hoga, so force of attraction between protons and electrons will increase, and therefore energy required to remove electron will increase, and ionization enthalpy increases. So अगर हम लोग ग्रुप 16, 17, 18 का देखेंगे तो 16 का सबसे कम है, फिर ग्रुप 17 एंड देन सबसे ज्यादा है ग्रुप 18. Okay, all of you. Yes, miss. But group 16 has less ionization enthalpy than group 15. ये ऐसा क्यों होता है? All of you. Why this occurs? मैम एक इफेक्ट होता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा. No, not because of any effect. Miss, is it because वो जितने orbitals होते हैं group 15 Inert में pair back effect, fill हो जाते हैं? ma'am. No, Tanush, no. Because group 15, if you say general electronic configuration, it is NH2, NP3. हाँ वो stable है, half filled orbital. And group 16, NH2, NP4. So this is half filled, na? Outermost orbital is half filled and therefore stable. Stable hai, therefore ionization enthalpy is more. Clear?
Yes, मैम all of वो you इनर्ट have पेयर got this. इफेक्ट का क्या होता था वो एक बार बताओगे आप? Inert pair effect. Inert pair effect क्या होता है? NS2. Inert pair effect अभी सबसे पहले कहाँ पे होता है? 13, 14 है ना? Yes, ma'am. Yes, miss. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 13 का NS2 NP1, इसका NS2 NP2. So S is fully filled. So it behaves inert. It do not donates its electrons. So electrons are only donated by p orbital. That is inert pair effect. Okay, Yes, ma'am. all of you on your camera. Why cameras are off? तुम लोग को सुना ही नहीं दे रहा है? हाँ, चलो fast on. On it fast. Now third property is electronegativity. So when we go down the group, what happens? Electronegativity decreases. Yes, electronegativity decreases. Number of shell increases. Screening effect increases. Force of attraction between protons and electrons decreases, and tendency to attract electron decreases, and electronegativity decreases. So all of you, what is electronegativity? What is electronegativity, all of you? Amount of energy which is lost to accept an electron and form an ion is known as electronegativity. Wrong, Tanush. Miss, tendency of an atom to accept an electron to gain stability. No. Tendency of an atom to attract electron is electronegativity. मैम मैंने जो बोला वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है. Ah. So note down karo what is electronegativity. It is a tendency to attract electron. मिस लेकिन मैंने क्या रॉन्ग बोला था? तुमने बोला एक्सेप्ट करने का ना, एक्सेप्ट नहीं, गेन नहीं करता है. Electronegativity is a property which gives the tendency of an atom to attract electron. Attract करना is different and gain करना is different. पहले atom attract करता है and then वो उसको अपने अंदर accommodate करके लेता है. Accommodate करके लिया means उसने उसको accept किया. Okay, miss. हम हर एक एटम नहीं करता ना, थोड़े सिर्फ अपना अट्रैक्शन दिखाते हैं ना उसके. हाँ, अभी जैसे शेयरिंग करना है इलेक्ट्रॉन, शेयर करने के लिए भी उसको पहले वो शेयर कर रहा है मीन्स क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है. गेन करना, एक्सेप्ट करना फॉर्म्स एन आयोनिक बॉन्ड. But he is only attracting. It means there will be a formation of covalent bond.
When we go from left to right, what happens when we go from left to right? Nuclear charge increases, size decreases, force of attraction between protons and electrons increases, तो इसका मतलब क्या होगा? Tendency to attract electron Increases. and electronegativity increases. So group 16 has more than group 17 has more than that of 16, and group 17 has more than group 18. Group 18 जो है वो fully filled है ना, is having fully filled orbitals. It has fully filled orbitals. Fully filled orbitals होने की वजह से ये कैसे होते हैं? Stable होते हैं, and therefore less tendency to attract electron. So electronegativity is least. This is clear, all of you? Miss, last word you had written electronegativity is least. No? What you are asking, ask it again. Last word you had written electronegativity is least. Least. So राज, तुम्हारा हमेशा ही हर एक लेक्चर में तुम्हारा प्रैक्टिकल्स होता है 8 o'clock. आज भी तुम्हारा प्रैक्टिकल है, लास्ट 2 लेक्चर में भी तुम्हारा प्रैक्टिकल था. मिस एक्चुअली हमारा रहता है, मतलब हम लोग सेम क्लास में, तो हमारा मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को रहता है प्रैक्टिकल. So you are also leaving early? Yes ma'am, I have to leave by 8. But go through recordings, Yashashvi, because this chapter is important chapter. इसका सबसे ज्यादा वेटेज है बाकी सब चैप्टर्स में, बोर्ड्स में. Fourth is electron gain enthalpy. Ma'am, 1 second. Ma'am. Can you show the last screen? Can you on your camera? First on your camera and keep it on only forever. Yes, Sidhu? Yes, ma'am. On your camera. Ma'am, it's on. No, now it is on.
So now all of you, what is electron gain enthalpy? What is electron gain enthalpy? Amount of heat released when an isolated gaseous atom accepts one electron. When an atom accepts an electron to form an ion. Yes, energy released on gaining an electron is electron gain enthalpy. You can write it down. Energy released on gaining electron by an isolated gaseous atom is electron gain enthalpy. Could you please repeat? Energy released on gaining of electron by an अब वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद बनता है ना आइसोलेटेड गैसियस एटम. No. Now this is fluorine gas. It is an isolated gaseous atom. It will gain one electron. It will become Cl minus. So Cl minus के साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज होता है. So वो रिलीज एंथैल्पी को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं. And it is in negative because it is आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी वो जो एटम रहता है वो पहले से आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में रहता है. yes. ओके मैम. उसको आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होना पड़ता है बिकॉज गैसियस में ही attraction is less between the atoms. So gaining and losing electrons become easier. सब लिखा हुआ है मौलिक 11th स्टैंडर्ड में. Just go through the notes. Energy released on gaining electron by a isolated gaseous atom is called electron gain. गैसियस स्टेट में मैम ये अट्रैक्शन कम रहता है इसके लिए आराम से होता है ना उसका. Chalo, so now down the group. Down the group, what happens? Number of shells increases. Screening effect increases. Force of attraction decreases and electron gain enthalpy will decrease. Yes, tendency to attract electron decreases. अगर पहले attract ही नहीं means attract करने का tendency क्या हो रहा है, decrease हो रहा है. So initially electron has to be attracted and then it has to be gained. But अगर attraction करने का ही tendency कम है तो gaining tendency भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. Okay, and therefore electron gain enthalpy decreases. Clear? Left to right. Nuclear charge increases
force of attraction between protons and electrons increases, tendency to attract electron increases. इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब गेनिंग टेंडेंसी is also increasing. And electron gain enthalpy increases. Okay. Now, group 18. Can you show the last slide? Yes, on your camera first. Yes, ma'am. Done, ma'am. Group 18, all of you. Group 18 shows, you can see in that table also. Table number, table number 7.4. You can see group 18 जो है वो positive electron gain enthalpy show कर रहा है. और एनर्जी रिलीज होता है ना, तो एनर्जी रिलीज मीन्स कैसा होना चाहिए, एनर्जी नेगेटिव होना चाहिए ना. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज पॉजिटिव एंथैल्पी. बट ग्रुप 18 पॉजिटिव शो करता है. मैम बिकॉज वो ऑलरेडी स्टेबल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके. तो रिपल्शन होता है ना, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने को देता ही नहीं. सो ग्रुप 18 हैव फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड स्टेबल. फिर अभी आगे क्या होगा, फुल्ली फिल्ड एंड स्टेबल है, फिर आगे So it does not tend to accept electrons to form a configuration because already stable. So when group 18 tries to gain electron, repulsion occurs. Yes, all of you, repulsion क्या होगा, occur होगा. Repulsion will occur, and to overcome the repulsion, Miss dense electron cloud के वजह से होगा ना. हाँ, क्योंकि fully filled है ना, तो density of electron is more. So to overcome repulsion, energy is supplied. And therefore, electron gain enthalpy becomes positive. Okay. In group 17, ये सब हम लोग ने 11th standard में modern periodic table में we have studied. This is just a revision of all that. In group 17, now you have fluorine, मैम वो जो bromine. एनर्जी सप्लाई होता है वो किसके थ्रू होता है? हाँ. एनर्जी सप्लाई जो होता है टू ओवरकम द रिपल्शन वो किसके थ्रू होता है? एनर्जी हम लोग हीट देंगे, यही पूछ रहे हो ना. सोर्स ऑफ एनर्जी विल बी, यस. सो इट विल बी इन फॉर्म ऑफ हीट. ओके, तो एब्जॉर्ब करेगा ना मैम. हाँ. So down the group, हाँ बोलो. Down the नहीं वही group, पूछ रहा था, सराउंडिंग सेंसर.
Yes. Down the group, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? क्या होता है? Positive. Down the group, electron gain enthalpy Decreases. decreases. So ऐसा आना चाहिए ना? मिस वो F और Cl के बीच में जो एरो है वो Cl की तरफ होगा ना, लेकिन Yes. But chlorine has more electron gain enthalpy than fluorine. So anybody can answer this? Why? And this is nothing. क्योंकि फ्लोरीन जो है उसका साइज इतना छोटा है और इतना उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो इतना डेंस है कि वो बराबर से रिएक्ट नहीं कर पाता, जबकि Cl के अंदर एक शेल और है, तो इसीलिए वो जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है ना, वो फ्लोरीन में बहुत होता है लेकिन क्लोरीन में उतना नहीं होता। Good. Correct. So fluorine is 1s2, 2s2, 2p5. Fluorine is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. So when electron will be gained, here it will be gained in 2p orbital, and here it will be gained in 3p orbital. Okay. Now this has 5 electron, this also has 5 electron. Now size of 3p is greater than 2p. Yes, all of you. Size of 3p is greater than 2p. Yes, ma'am. And दोनों में भी 5 electrons है. Both have 5 electrons. So now, where will be more electron density or clouding? फ्लोरीन. 2p has more electron clouding than 3p. So when electron is accepted, repulsion occurs in 2p. And therefore, electron is not easily gained by fluorine compared to chlorine. And electron gain enthalpy of fluorine is less than that of chlorine. This is clear, all of you? Similar case occurs for oxygen and sulfur. Sulfur has more electron gain enthalpy than oxygen. Reason is same. Yes, all of you, is this clear? Good morning, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning.
Armin, So now, Armin, Armin, आवाज आ रही है? इनको कितने बार मैं बोल रही हूँ कैमरास ऑन करो, ऑन करते हैं उतने टाइम के लिए, फिर ऑफ हो जाते हैं। मैम सीटी वाले तो कभी नहीं करेंगे कैमरा ऑन, और करेंगे भी तो आधे करेंगे और आधे नहीं करेंगे, और वो भी अटेंडेंस लगने के बाद बंद कर देंगे कैमरा। आर्मिन है क्या लेक्चर में? सोया रहेगा। मैम उसको वेटिंग रूम में डाल दो। ये इसने 1 महीने से लेक्चर नहीं लिया मैम किसी का भी, और अभी जब लेता है तो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। हाँ तो वो सोता रहेगा मैम के। उसके पेरेंट को भी कॉल किया, उसके पेरेंट्स को भी नहीं पता कि एक महीने से लेक्चर ही नहीं ले रहा है। चलो उसको डाल दिया, उसको मालूम भी नहीं रहेगा वो वेटिंग रूम में है। मैं सर को मैसेज कर देती हूँ, नीरव सर को। हाँ हेलो मिस। हाँ बोलो क्या हुआ? मिस व्हाट हैव यू रिटन इन द ब्रैकेट? ब्रैकेट में किधर कुछ मैंने लिखा है? Similar case occurs for Similar case occurs for oxygen and sulfur. Sulfur has more electron gain enthalpy than oxygen. Reason is same. Okay? Arya? Okay, miss. Thank you, miss. Chalo, next is physical properties. Physical properties of group 16. So what are the elements of group 16? उससे टेपो, याद है ना सबको एलिमेंट्स ग्रुप वाइज? Yes, ma'am. ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। सो ऑक्सीजन कैसा है? गैस है, and remaining all are solids. Oxygen and sulfur are non-metal. They are non-metals. Cellurium, tellurium, metalloids. And polonium is radioactive metal. Oxygen is diatomic. It is diatomic gas. Remaining are polyatomic.
Melting point, boiling point increases with increasing atomic number. Melting point, boiling point increases down the group. क्यों ऐसा होता है? Size increases. Yes. Size increases. Van der Waals force increases. And therefore melting point, boiling point increases. सोचो ना ये diatomic है and they are S8. ये actually S8, Se8, Te8 ऐसे फॉर्म होते हैं. So S8 तो but obvious है ना size will be more than O2. And और एक चीज means ऑक्सीजन गैस में है, बाकी इन लोग सॉलिड्स में है. So क्या होगा डाउन द मैम साइज बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स फोर्स कम होगा. कैसे तनुष? What is Van der Waals force? How it occurs? मैम वो फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होगा ना मैम. So helium है 2 protons, 2 electrons. So this electron attracts this proton. This electron attracts this proton. This electron attracts these protons, and this electron attracts these protons. This is Van der Waals force. So this is helium. Next is neon. Neon molecules are there. 8 protons, 8 electrons. So this electron will attract its proton. This proton will attract these electrons. So now Tanush, tell me where will be more stronger attraction, in 2 protons or in 8 protons? 8. So size increase होगा ना? हाँ मैम. So size increases, Van der Waals force also increases. मैम Yes, all मैं of वो you, we have studied this in 11th standard. All of you wake up. States of matter, London dispersion force. मैं वो Yes, ma'am. नंबर ऑफ शेल्स के Yes, ma'am. perspective से बोल रहा था मैम कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ा तो डिस्टेंस Based on size, of course. When number of shells will increase, size will increase, na? तो साइज बढ़ेगा तो फिर दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस भी कम होगा, वैसे बोल रहा हूँ ना. No. Now you tell me. More attraction will be present between 2 protons, 2 electrons, or between 8 protons, 8 electrons. 8 protons 8 electrons. When mass, see, number of तो वो साइज को protons, कॉम्पेंसेट करता है. when number of protons and electrons increases, mass also increases, na? Size increases, volume increases, and Van der Waals force also increases. So just refer, अगर ये concept भूलने को हो गया है, तो just refer London dispersion force in states of matter. Then group 16 shows allotropy. Okay. Now physical properties of group 17.
Ma'am, please Can show you show grid the view. last slide? Then हम वो लास्ट पॉइंट क्या लिखा था आपने ग्रुप 16? मैम ग्रुप 16 में मतलब अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं अलग अलग एलिमेंट्स, इसके लिए बोल रहे हैं ना एलोट्रोपी है? No, what is allotropy? Different structure. Diamond, graphite, fullerene are allotropes of each other. Polymorphism means तो allotropy. इसमें वो किधर अप्लाई हो रहा है? O2, O3 होता है, ओके, हाँ S8 होता है, S2 होता है, S6 होता है। वैसे ही सेल्यूरियम और टेलुरियम के भी होते हैं, S2, Se8 ऐसा, Te8, Te2 ऐसा। So they show different structure, but इतना डिटेल में तुम लोग को नहीं है टेक्स्ट बुक में, तो इसीलिए वो मैंने नहीं बताया, जितना है उतना ही बता रही हूँ। Mr. as a point ये लिखे कि group 16 shows polymorphism. And write it here only. Their statement is group 16 show allotropy. तो तुम्हें ऐसा एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, which of this group show allotropy? 16, 17, 18, none. So it will be group 16. 17, 18 नहीं show करते allotropy. Yes, all of you, अगर किसी ने screenshots miss किए हैं, you can take it fast. This is first screen. Second screen. Third screen. Fourth screen. मैम Yes. मैम ये बोर्ड लेक्चर है कि सीटी? बोर्ड्स मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था लेक्चर के। नहीं, मैं थी नहीं ना, मैं 7:30 के बाद ज्वाइन हुई, इसके लिए मुझे पता नहीं। हाँ, बोर्ड्स का है लेक्चर, बच्चों को पता है। ओके ओके मैम। किसका फुल फॉर्म चाहिए तुम्हें मौलिक? एसई स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये देखो इधर लिखा है मैंने, स्क्रीनिंग इफेक्ट फुल फॉर्म। Fourth screen and this is fifth screen. केसर फर्स्ट स्क्रीन, जल्दी। And all of you make proper notes of P block. P block is very important chapter and little difficult than other chapters of chemistry 1. That is because कि यहाँ पे reactions है ये chapter में बहुत सारा. So means मुझे तो नहीं difficult लगता है, but many students face problem in doing P block. I don't know why, because उनको reactions पसंद नहीं होते इसीलिए. But this is most asked chapter. This is the chapter which has more weightage. And in CET also 2 questions are asked from this chapter. So do it very properly. It is very easy chapter.
अगर रिएक्शन छोड़ दोगे कर मीन्स अगर मैं एकदम वर्स्ट केस की बात कर रही हूँ, अगर डिफिकल्ट लग रहा है रिएक्शंस को याद करना तो रिएक्शंस मत याद करो, उसके अलावा जो कुछ भी है चैप्टर में उसको करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिएक्शंस जो है वो ज्यादा नहीं पूछते हैं, बाकी चीजें ज्यादा पूछते हैं चैप्टर की जो अभी हम लोग कर रहे हैं, फिजिकल ट्रेंड, स्ट्रक्चर्स which we are going to study in coming chapter. Okay, so don't think of leaving this chapter. मिस ये जो आप कह रहे हो कि रिएक्शन का बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ये आप बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो किसी? Yes, both point of view. ओके। एनसीईटी में भी कैसा है कि मीन्स मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कम पूछते हैं, अभी रिएक्शंस के जो क्वेश्चंस बनते हैं दे आर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस. In CET also application based questions are asked more rather than memory based questions. So reactions पे अभी तुम previous year questions देखोगे तो reactions पे कम questions है comparatively other questions. So all of you, fluorine, chlorine, bromine, iodine, acetylene. So this is radioactive. We are not going to study it. This is gas, this is gas, this is liquid, and this is solid. They all are diatomic in nature. Then fluorine का color yellow होता है. Chlorine is greenish yellow. Bromine is red. And iodine is violet. Fluorine and chlorine reacts with water, whereas bromine and iodine are sparingly soluble in water. But highly soluble in organic solvent. मैम FnCl soluble है वाटर में जिसे रिएक्ट कर. हाँ, पहले soluble होते हैं and then ही react करते हैं ना. Yes मैम. Like chloroform, carbon disulfide, carbon tetrachloride, etc. Bond dissociation enthalpy. इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कैसा होता है? सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर फ्लोरीन, एंड सबसे कम है आयोडीन. सो ये इम्पोर्टेंट है, इसको काफी बार पूछते हैं बहुत सारी जगह पे. सो रिमेम्बर दिस ऑर्डर. Now, why fluorine has less bond dissociation enthalpy than chlorine? That is because अब ऐसा ट्रेंड उल्टा फुल्टा क्यों हुआ है? Bond Can you repeat? dissociation, I'm writing it. Bond dissociation enthalpy of fluorine is less than chlorine. Why?
दैट इज बिकॉज फ्लोरीन जो है, साइज ऑफ फ्लोरीन जो है वो स्मॉल है क्लोरीन से, एंड इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में उतने ही है। 2p में, फ्लोरीन के 2p में भी 5 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के 3p में भी 5 इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन का कैसा होता है, स्मॉल साइज है, एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर, whereas chlorine का size is large and therefore electron density is less. So repulsion occurs in fluorine in the bond, repulsion occur in the bond pair of fluorine and it gets easily break. Clear? मैम वापस से बोलो ना। See, fluorine का size छोटा है क्लोरीन के साइज से। फ्लोरीन का साइज इज स्मॉलर देन क्लोरीन। फ्लोरीन में 2p ऑर्बिटल आता है एंड क्लोरीन में 3p ऑर्बिटल आता है। इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है फ्लोरीन में ज्यादा है देन दैट ऑफ क्लोरीन। तो रिपल्शन अकर्स इन बॉन्ड पेयर्स। बॉन्ड पेयर यानी ये जो पेयर है यहाँ पे जिसने बॉन्ड बना है, यहाँ पे रिपल्शन होता है ड्यू टू स्मॉल साइज। तो उसको कम एनर्जी चाहिए रहता है डिसोसिएट करने। Yes, and since there is a repulsion, less energy is required to break it. Clear, all of you? Yes, miss. So you will write it in your own words, all of you. Yes, all of you, you can write down this explanation. It is there on page मैम number तो 1. ब्रोमीन में भी सेम रीजन है ना? ब्रोमीन में क्या सेम? ब्रोमीन का क्या? हाँ, तो क्योंकि ब्रोमीन ब्रोमीन से भी कम हाँ, दिखा है ना। पेज नंबर क्या बोला? पेज नंबर 141 पे है, देखो प्रॉब्लम 7.5. राइट इट फ्रॉम इट, रीड करो उसको, स्टेटमेंट्स को और लिख लो फटाफट, फिर हम लोग ग्रुप 18 के लिए करते हैं। Yes, all of you take page number 141 from your textbook, problem 7.5. Same they have given there. You write it from there fast. प्रॉब्लम कौन सा मैम? 7 पॉइंट हाँ दिखा है। भाकरी केली तुला त्या. हाँ तनुष, क्या बोल रहे हो? मैम 1 सेकेंड मैम। हाँ बोलो ना। 1 सेकेंड। हाँ अनुराग। यस मिस। हाँ आप है ना 2-3 बार ऐसा मेरे साथ कर चुके हो। मैं आज आपको बोल रही हूँ कि आप, मैं जब भी एसएस डालती हूँ अटेंडेंस का, उसके बाद आप लेक्चर ज्वाइन करते हो, फिर मुझे बोलते हो कि मैं लेक्चर में प्रेजेंट हूँ। मैं भी लेक्चर ज्वाइन करके बैठी हूँ, मुझे भी पता है कौन सा बच्चा कब ज्वाइन करता है और कौन सा बच्चा कब लेफ्ट करता है। मैंने भी अनुराग को नहीं देखा है लेक्चर में। और अभी अनुराग ये लास्ट टाइम आप मेरे साथ में कर रहे हो, इसके बाद अगर आपने मेरे साथ इस तरह से किया ना तो मैं सीरियसली सर को कंप्लेंट कर दूंगी फिर। मिस वो क्या लिखा है, ब्रोमियम एंड आयोडीन। ब्रोमीन आयोडीन
क्या? मिस वो क्या है डैश soluble in H2O, वो सेकंड पॉइंट क्या है मिस? ब्रोमीन एंड आयोडीन। स्पेरिंगली सल्यूबल. अच्छा स्पेयरिंग। So all of you, it's done, na? Yes, ma'am. And reason is clear, na, to all of you. किया ना सब लोग ने? माइंड ओपन रख के रीड किया ना? Yes, miss. शिप्रा मैम देखो 90 हो गए, अभी 93 थे ना, 90 हो गए. 98 थे, 98 अभी तक तो. अभी मैम देखना 8:30 के बाद ना आधे रह जाएंगे. मैम आप वापस से अटेंडेंस लेना 9:30 को. वो 9:15. हाँ वो तो लेना ही पड़ेगा. आप तो वो रोज का शेड्यूल बनाना ही पड़ेगा मुझे. हाँ 9:15 में 9:15 को जो रहेंगे ना उनका ही अटेंडेंस लगाना. हाँ मैम, इनमें से अगर किसी को लेक्चर अटेंड करने मतलब अपना प्रैक्टिकल या कॉलेज का कुछ ऐसा ज्वाइन करने जाना है तो मैसेज करके जाओ या ग्रुप में मैम को बता के जाओ, मतलब आपकी अटेंडेंस बराबर रहेगी. मुझे सिर्फ राज ने और यशस्वी ने बताया है कि उन लोग जाने वाले हैं. ठीक है. So now group 18 elements are helium, neon, argon, krypton, xenon, Radon. radon. Yes, Sidhu, what happened? Any problem? No, ma'am. Not. So इसको याद कैसे कर सकते हो तुम लोग? हीना, नीना और कटरीना, जेरोक्स, रानी. हीना, नीना और कटरीना. Xerox रंगीन. हीना, नीना और कतरीना. जेरोक्स, रानी. सो बाकी मैंने ग्रुप 17 तक का तुम लोग को बताया है शॉर्ट फॉर्म, हाउ टू रिमेम्बर. 18 का नहीं बताया था, सो अभी बताया. So now all of you, they are monoatomic in nature. They are monoatomic. Gas. Non-reactive. Then
sparingly soluble in water because they are non-polar in nature. No charge, na? They are fully filled, no charge. So they are sparingly soluble in water. Group 18 have low melting point, and boiling point. Now, why they have low melting point, boiling point? Because they are monoatomic in size. They are monoatomic, therefore small in size. साइज में स्मॉल है, फिर उसके वजह से क्या होगा? वैन डर वाल्स फोर्स इज स्मॉल. वैन डर वाल्स फोर्स स्मॉल है, एंड देयरफॉर क्लियर. मैम डायटोमिक होता है तो दोनों एटम्स का साइज मिला के बोलते हैं ना. हाँ, दोनों. अभी जैसे F2 और बोलते हैं ना, सो दोनों एटम्स को मिला के बोलते हैं. इट इज F2, Br2, Cr2. and ma'am the van der Waals force will be amongst themselves, right? अपने Yes. एटम का इलेक्ट्रॉन ओनली. हाँ. अभी मैं बोल रही हूँ कि फ्लोरीन इज गेटिंग बॉइल्ड. इसका मतलब क्या है? सारे F2 के मॉलिक्यूल्स ना, F2 molecules are getting convert from liquid to gas. So आपस में ही yes, all of you, this is done now. Now next is One second. Miss, can you show last screen? Miss, yes, miss. Miss. Yes, ma'am, done. now next is anomalous behavior. So all of you, we have already studied anomalous behavior in group 1, group 2, 13, 14, 15. So every group, first group member of every group behaves different than other. Anomalous behavior of oxygen. So first, anomalous behavior of oxygen. Oxygen is diatomic. While others are polyatomic. Example, sulfur, S8, Se8, etc.
oxygen is paramagnetic. Yes, all of you, correct na? We have Yes, ma'am. studied in MOT. Oxygen is paramagnetic, while others are diamagnetic. Diamagnetic. Oxygen shows oxidation state. कौन सा oxidation state show करता है oxygen, all of you? -2, -2, -1, oxide, peroxide, and +2, and this is only with fluorine. +2 is shown only with fluorine in a compound OF2. मिस तो ये +2 वाला स्पेशल केस है क्या? हाँ, only with fluorine. Since fluorine first electronegative element है ना, and second oxygen है, so oxygen से ज्यादा electronegative fluorine है. आमचा तर भरोसा नाही होता. आता ते हे झाले. थोडी पर्यंत ना 700 नंबर जाते आहे एक तासात तरी. आणि सुट्टी तिथून म्हणजे लवकर यायची गरज नाही. While others shows oxidation state of -2, +2, +4, +6. Okay. So other oxidation states are not shown due to absence of d orbital. मतलब वही ना +3 पेज में. हाँ, मीन्स वही जो नहीं शो हो रहा है, that is +4 and +6. +6 है ना. +6 भी नहीं शो करेगा ना ऑक्सीजन. H2O is liquid. मतलब जो दूसरे एलिमेंट शो कर रहे हैं वो ऑक्सीजन नहीं करेगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल. Oxygen is liquid at room temperature. While others are gas. Others यानी H2S, H2SE, H2TE, they are gas. Why it is liquid at room temperature? That is because water has strong hydrogen bonding. Strong
हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड देयरफॉर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने की वजह से वो लिक्विड फॉर्म में होता है, while others में weak dipole interaction is there and that's why it is in gas. Fifth point, covalency of oxygen cannot exceed 4 due to absence of d orbital. What is the reason for its anomalous behavior? Reason for मैम वो 4 भी नहीं होता ना कभी भी, हाँ 4 भी नहीं होता ना कोवैलेंसी उसका। नहीं, मीन्स वो कितने बॉन्ड्स बना सकता है ऑक्सीजन? मैक्सिमम 2 बॉन्ड्स बना सकता है, हाँ वो 2 बॉन्ड्स बना सकता है। O3 में नो 2E, वो डबल बॉन्ड सिस्टम होता है ना वो। हाँ, that is because of small size, high electronegativity, high electron, it is the second most electronegative element. Then absence of d orbital, there is an absence of d orbital, no d orbital present, and also bus, 3 points. Note it down fast. Ma'am, OS is oxidizing state now. Yes. मैम तो बाकी सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है ना? हाँ, बाकी डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है ना, ऑक्सीजन का ही ज्यादा है ना सबसे। हाँ मैम। Yes, all of you, it's done. So, Kesar, oxygen can form maximum 2 bonds. Now, why maximum 2 bonds will be formed?
Now, what is the electronic configuration of oxygen? It is 1s2, 2s2, 2p4. There is no d orbital. So 1s2 and this is 2p4. So यहाँ पे कितने bonds बनेंगे? एक ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनेगा और एक ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनेगा ना. ये px के साथ कोई बॉन्ड बना सकता है ना s के साथ कोई बॉन्ड बना सकता है, because they are already paired. So the covalency is 2, cannot exceed 4. बाकी सब 4 से ज्यादा बॉन्ड्स बना सकते हैं. This is clear? Yes, ma'am. Hello, ma'am. हाँ बोलो व्रज. Ma'am, reason for anomalous behavior in second grade क्या है? High electronegativity. Okay, ma'am. Next is anomalous behavior of fluorine. So what is the reason for fluorine to behave anomalous? First reason, small size. ये common reason है सबके लिए. Then high electronegativity. Absence of d orbital. And low FF bond dissociation enthalpy. Low bond dissociation enthalpy. So these are the 4 reasons for its anomalous behavior. Now, what are the properties which are different than other group member? So first property, ionization enthalpy, electronegativity, electrode potential are all higher for fluorine than for other group member. Melting point, boiling point, ionic covalent size, or you can say radius, electrode potential क्या? tendency to gain electron. Electron gain enthalpy are low.
tendency to gain electron. And you will study electron potential in detail in electrochemistry. Are low compared to उसमें और others. फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में फिर फर्क क्या हुआ मैम? Enthalpy, electron gain enthalpy means energy is released, na? It is an enthalpy, it is an energy. Most of the reactions of fluorine are exothermic. It forms only one oxo acid, HOF, while others form more than one. One ही क्यों form करता है? That is because of its small size. Next point, HF is liquid due to presence of hydrogen bonding, while HCl, HBr, HI are gases. वो लास्ट में क्या लिखा है? HF is liquid due to presence of Hydrogen bonding. So Yash, you are writing with me only. हाँ, सब समझ रहा है तुम्हें जो पढ़ा रही हूँ मैं? हाँ मिस, मतलब थोड़ा बहुत समझ रहे हैं। तो पूछो ना जो नहीं समझ रहा है वो। थोड़ा बहुत समझ रहा है, तुम्हारा ध्यान पूरा लिखने में है, समझने में कम है। Ask me whatever you are not understanding. पूछ रहे हैं ना बाकी बच्चे। मिस वो प्रॉपर्टीज में जो फर्स्ट लाइन है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आर ऑल हायर के बाद क्या है? For fluorine, then for other group member. मिस आप वो लो FF बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एक्सप्लेन कर सकते हो? अभी ये हम लोग ने किया ना, तुम्हें मैंने कुछ बोला था लिखने के लिए, ये यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है ये ऑलरेडी इधर। Yes, you have written this. हाँ यस मिस, यस मिस, यस मिस। पूछने का इसके लिए कुछ भी नहीं पूछने का कि मिस को लगे हाँ मेरे को सब समझ में आ रहा है, ध्यान है। अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया था वो, तुमने लिखा भी है ना? क्या लिखा है रीड करो यश, चलो फटाफट जोर से रीड करो, मुझे आवाज आनी चाहिए और कैमरा ऑन करो। Miss, fluorine has small atomic size than chlorine. The lone pairs on each fluorine atoms in F2 molecule are so close together that they strongly repel each other and make the FF bond weak. Thus, it requires less amount of energy to break the FF bond. In Cl2 molecule, the lone pairs on each chlorine atom are at a larger distance and the repulsion is negligible. The Cl-Cl bond is comparatively stronger. If a bond dissociation enthalpy of F2 is lower than that of Cl2. क्या समझा इसमें तुम्हें?
Yes, Yash, what you have understood in this? इसकी फ्लोरीन atomic size is smaller than chlorine, so lone pair close रहते हैं उसमें किसमें? F2 molecule में सो क्लोज होंगे लोन पेयर्स तो क्या होगा? repulsion रिपल्शन होगा। और फ्लोरीन में रिपल्शन होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब ज्यादा साइज दूर बड़ा है ना फ्लोरीन का। तो रिपल्शन अगर फ्लोरीन में ज्यादा है तो उसको कम एनर्जी लगेगा ना? यस मैम। Ma'am, please read the second last point, please. कौन सा वाला? It forms one oxo acids. It forms only one oxo acid, HOF, while other form more than one. मिस वो HF इज अ लिक्विड, वो अलग पॉइंट है कि वो ऑक्सो No, एसिड no, वाले it का is a कंटिन्यूएशन? different. No, it is a different point. ओके मिस। डन मिस। Ma'am, once again. So all of you anomalous properties is done. Now we'll start. Yes. Flask. Yes. Yes. He's telling last slide बता। Anomalous properties are done. Now we'll start with the chemical properties of group 16, 17 and 18. ग्रुप 16 से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट। So first chemical property is oxidation state.
For group 16. It is NS2 NP4. General electronic configuration is NS2 NP4. Okay. Oxidation state मैम 2 होगा ना? हाँ. So for oxygen, oxidation state is -2, +2 and -1. Yes, all of you. मैम वैलेंसी में साइन नहीं आता है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है. हाँ. Yes. This is for oxides. This is for peroxide. Okay. In OF2 with fluorine, oxygen shows oxidation state of +2. Since fluorine is more electronegative than oxygen, oxygen act as positive cation. Okay, all of you. Is this clear? Yes, ma'am. Now, other elements, sulfur, cellurium, tellurium, consist of empty d orbital. इन लोग के अंदर क्या होता है? empty d orbital present होता है. So now, अगर हम लोग सल्फर या फिर सेल्यूरियम या फिर टेल्यूरियम की बात करेंगे, they have NS2, NP4 and ND0 ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं. This is ground state, all of you. This is ground state. ठीक है? एक्साइटेड स्टेट में Yes. अनपेयर्ड वाला Excited. पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन सेपरेट होकर डी ऑर्बिटल में जाएगा ना मैम? Yes. Excited state 1. In excited state 1 क्या होगा? P का एक जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके किधर जाता है? D में चला जाता है. Yes, all of you have studied in nature of chemical bonding. Yeah. Yes. Yes, ma'am. Excited state 2 क्या होगा? ये वाला वो S इलेक्ट्रॉन. वाला भी D पे चला जाएगा मैम. Yes. मिस, सो इज इट बिकॉज कि p ऑर्बिटल में जो हाफ फील्ड वाला जो स्टेबिलिटी है वो अटेन करने के लिए वो d ऑर्बिटल में चले जाता है वो इलेक्ट्रॉन? No, वो excited state में वो they acquire high energy and they move from lower state to higher state. Okay, miss. So in this case they will show oxidation state of -2 or +2. Either they will take 2 electron to become fully filled or they will donate these unpaired electrons. यहाँ पे ये +4 शो करेगा और यहाँ पे ये +6 शो करेगा. Okay, so sulfur, cellurium, tellurium shows -2, +2, +4, +6 oxidation state also. And that is due to presence of d orbital. This is clear, all of you? Yes. Yes, ma'am. Note it down fast. इसको screenshot ले लो, चलो fast. We have you have CET exam on next Sunday, 12th September. We have to finish chapter before that.
मिस मैम लेकिन आप इस हिसाब से इसका एग्जाम नहीं है। हाँ 12th को है ना, नेक्स्ट Yes, संडे miss. है, सो वी हैव टू कंप्लीट इट बिफोर दैट विद सीईटी। मैम सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसका प्रिविजन ऑफलाइन लेक्चर खांडी वाली में भी लोगे क्या? Yes, I am planning कि once my syllabus gets over completely, then I will take offline lectures for numericals ओके for मैम। Carnivally also. मैम वो मैंने सॉल्यूशन का टेस्ट और ग्राफ किया तो उसमें से एक तो ऐसा माइनर डाउट है तो आप बाद में कर दोगे? हाँ हाँ मिस मुझे भी थर्मोडायनेमिक्स के 2-3 क्वेश्चंस में डाउट है मिस। वो 2 क्वेश्चंस में 2 आंसर्स दिए पीछे। ठीक है। तो यश तो तुम आते हो ना ऑफलाइन, तभी पूछना चाहिए तुम्हें। ओके मिस। सो मोस्टली अपना सितंबर में सिलेबस हो जाएगा। Next only I have to teach one more chapter, that is chemical kinetics. So mostly from next month I will start my offline lectures for numericals. ओके मैम। तो बाबा खोबरे किसा हाँ Now next is group 17. General outer electronic configuration is NS2 NP5. Okay. In fluorine, oxidation state of only -1 is shown. No positive oxidation state is shown by fluorine due to highest value of electronegativity. So fluorine is the first highest element showing electronegativity, and इसके वजह से वो Yes, ma'am. positive oxidation state show ही नहीं करता है. It only show oxidation state of -1. Okay. Now others, chlorine, bromine, iodine, show variable oxidation state due to presence of d orbital. So if we say the electronic configuration will be NS2, NP5, ND0. Okay. So NS2, NP5, 1, 2, 3, 4, 5, and D is completely empty. This is ground state. ठीक है. अब excited state में क्या होगा all of you? Py में से एक इलेक्ट्रॉन D में जाएगा. In excited state 2, Px में से इलेक्ट्रॉन D में जाएगा.
In excited state 3, S का इलेक्ट्रॉन D में जाएगा. So this is, now in this state it will show +1 -1. Here it will show +3. Here it will show +5, and here it will show +7. Is this clear, all of you? Yes, miss. Take screenshots fast. मैम आपने एक्साइटेड स्टेट 1, 2 और 3 के लिए कैसे ये किया कि +3, +5 और +7 हो? ये दे देंगे ना electrons. This electrons will be given 3. Here 1, 2, 3, 4, 5. Here it is Okay. 1, 2. तो जो पार्शियली फिल्ड है सिर्फ वही देंगे ना, एमटी वालों का कुछ नहीं होगा. Yes. जो अनपेड होते हैं वही डोनेट होंगे. Now next is for group 18. General outer electronic configuration is NH2NP6. Orbitals are fully filled. Therefore, stable. Electron is neither donated or accepted or shared. So no oxidation state. When we go down the group, ionization enthalpy decreases. Therefore, xenon reacts with highly electronegative elements, that is fluorine and oxygen. So compounds of xenon, क्या है compounds xenon के, which are formed? XeF2, XeF4. मैम वो क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन इज नाइदर डोनेटेड एंड एक्सेप्टेड or shared. XeO3, XeOF4. So यहाँ पे xenon +2 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +6 है, और यहाँ पे भी +6 है. Okay, all of you.
कि भाई है ना क्वेश्चन भी बाधा है सुनने का आइडिया नहीं है वो भी सैंपल है सुपर है मतलब वो भी आप भी नहीं है पण ते आणलेले ना मी 4 ते पण संपले ते आमची पण 4 बरोबर अच्छा 2 वाजता बोलते तरी सगळं थोडीशी वेगळी आहे कोलंबी नका टाकू दुसऱ्या आत ना छोटे तुकडे ते झाड वापरले आहेत बघा अजून त्या मोठ्या डब्यामध्ये Next topic is chemical reactivity towards hydrogen. This is the second chemical property. Towards hydrogen. So let us do for group 16 first. So H2 plus elements of group 16 gives H2E. E is what? Oxygen, sulfur, cellurium, tellurium. Yes, ma'am. Got it. Vaishnavi, take it fast. So now H2O, H2S, H2SE, H2TE ऐसे compounds बनते हैं. And these are the hydrides. Now, water is liquid while these are gases. This is liquid and this is colorless liquid. और ये कैसा है? Colorless poisonous gas. This is odorless and this is bad smelling gas. मैम तो ये सब भी order से related सब question भी याद रखना पड़ेगा. Yes, whatever is there in your textbook, you have to remember everything. Okay, ma'am. H2E, okay. अभी जैसे अगर मैं ऑक्सीजन H2O लेती हूँ, now oxygen is what in H2O 1s2 2s2 2p4, ठीक है. So 1s2 2p4. अभी यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसको 2 बॉन्ड्स बनाता है वो हाइड्रोजन के साथ में. सो ये देखो ये 2 बॉन्ड्स अवेलेबल है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है फॉर मेकिंग द बॉन्ड्स.
So now what they will do, this is ground state. In hybridized state में क्या हो जाएंगे, they will get combined ना, all of you, orbitals will get combined, S और P combine हो जाएंगे. And which hybridization it will undergo? sp3. Yes, all of you, it will have sp3 hybridization, correct? Yes. Yes, ma'am. All H2E have sp3 हम hybridization. उसको आपने आइडेंटिफाई कैसे किया, वापस से बताना. See, you have oxygen in center. Oxygen is the center atom, and it is making two bonds with hydrogen. बराबर ना? So Yes, दो ma'am. bond बनाने के लिए दो unpaired electrons होनी चाहिए, जो कि है ना यहाँ पे. हाँ. Ground state में ही है. So they will directly undergo hybridized state. हाँ ठीक है, समझा मैं. और डबल बॉन्ड नहीं है इसके लिए sp3. हाँ, ये जो हाइब्रिडाइजेशंस होते हैं उसमें डबल बॉन्ड्स नहीं आते हैं ना, सिंगल बॉन्ड्स ही होते हैं. ओ मैम, ओके मैम. Now all of you see in table 7.5 HEH angle मिला सबको. पेज नंबर 144 पे देखो. मैम sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन भी होता है. हाँ, SP और sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है ना. हाँ. तनुष, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड नहीं पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में? नहीं मैम, आपने बोला ओनली sp3 इज अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, इसके लिए मैंने आपको ऐसा नहीं, पूछा. ये यहाँ पे इसमें ये पांचों के लिए सब अच्छा. लोग sp3 हाइब्रिडाइज अंडरगो करते हैं. ओके मैम, मुझे लगा आप इन जनरल बोल रहे, इसके Overall लिए नहीं, मैंने. only for group 16 hydrides I am talking. Yes, all of you take table number 7.5. वहां पे तुम लोग को एंगल्स दिख रहा है, HEH एंगल. वाटर के लिए है 104, H2S के लिए है 92, H2SE के लिए है 91 एंड H2TE के लिए है 90. तो ये कौन सा एंगल की बात हो रही है यहाँ पे? नाउ यू हैव वाटर. ये जो एंगल है ये 104 है. इन सल्फर it is 92. In Se it is 91 and in Te it is 90. Okay, all of you. So when we go down the group, HEH angle is decreasing. So क्यों decrease हो रहा है angle? Now if you see oxygen छोटा है size में. In H2O, size of oxygen is small. Yes. Therefore, more electron clouding. Yes, all of you. Electron clouding Yes, more ma'am. रहेगा तो more repulsion होगा. And therefore, angle is large. Angle कैसा है? Large है. Repulsion हो रहा है bond pair के बीच में. They are getting repelled. And therefore, वो क्या होगा? Angle जो है वो large है. Okay. Down the group जाते हैं हम लोग. So size of E increases. फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग क्या होगा? डिक्रीज होगा. डिक्रीज होगा, रिपल्शन कम होगा, एंगल कम होगा. Repulsion will decrease and therefore angle also decreases. Clear all of you? See, वो टेबल तुम लोग को reduced मीन्स तुम लोग को वो वैल्यूज नहीं याद रखना है, बट उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया है, ऊपर उसका थियोरी दिया है. So you have to remember this. Just तुम लोग के रेफरेंस के लिए मैंने बोला टेबल में देखो.
Okay, ma'am. Next is acidity. Ma'am, 1 minute. 2 minutes. Take it fast. Screenshot ले लो fast. Next is acidity. Now acidity means क्या होता है? The tendency acids have tendency to donate H plus. Yes, all of you. Now Yes. when we go down the group, size of E increases. So ये जो bond length है इन लोग का, ये increase होता है. होगा, all of you increase होगा. हाँ मैम होगा. Size increases, bond length of HE increases, bond length increase होगा, तो bond strength क्या होगा? Decrease होगा. Bond strength decrease होगा. So tendency to donate H plus increases and acidity increases. So H2O is least acidic and H2TE is most acidic. Clear? मैम बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो H आराम से डोनेट हो जाएगा, इसके लिए टेंडेंसी इंक्रीज होता है. Yes. नेक्स्ट है थर्मल स्टेबिलिटी. अभी मुझे बताओ, ये बॉन्ड्स का स्ट्रेंथ कम है तो स्टेबिलिटी क्या होगा? डाउन द ग्रुप बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस ना. बॉन्ड हाँ स्ट्रेंथ मैम, तो स्टेबिलिटी कम होगा ना. डिक्रीज होगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगा? डिक्रीज. डिक्रीज. Thermal stability is inversely proportional to reducing character. जितना ज्यादा thermal stability उतना reduce होने का tendency कम होता है. Stronger is the bond, tendency to get reduced is more. Sorry, less. They are inversely proportional. So thermal stability down the group decrease हो रहा है, तो reducing characters क्या होगा? Yes, increase होगा ना. मैम वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर वाला बताना जरा. अभी मुझे बताओ, अगर तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, हाँ मैम. तो रिड्यूस भी नहीं होगा ना तुम्हारा कंपाउंड. ओके, समझा. So H2O does not show reducing character. Okay, बाकी down the group it increases. सबसे ज्यादा H2TE reducing character show करता है. In your textbook character नहीं दिया है, property दिया है, so I'll write property. जो textbook में है वही word use करो. RP यानी reducing property.
Yes, all of you take screenshots fast. H2O does not reduce होगा ना मैम? H2O does not show reducing property. तो ब्रेक नहीं होगा. नहीं. Strong है ना bonding, hydrogen bonding. हाँ sir. मैम. चलो now next हम लोग करेंगे मैम एक मिनट वो. reactivity with hydrogen. मैम वो एंड में H2O आएगा ना? HTE ना. नहीं H2S दो बार लिख. हाँ वो SE है SE. Group 17. H2 plus X2 gives you HX. What is X here? Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Yes, all of you, बेटा एक यहाँ पे रह गया है मेरा पॉइंट तुम लोग को बताना, that is melting point. So melting point, boiling point का order क्या है यहाँ पे? H2O has highest, and then it increases down the group. So water has highest. Why? Has highest melting and boiling point due to presence of hydrogen bonding. Okay, this is due to presence of hydrogen bonding. Then after H2S, melting point, boiling point increases. क्यों increase होता है? Because size increases, van der Waals force increases, and melting point, boiling point increases. Clear? This is clear? Yes, Yes, sir. yes. Note it down fast. You have to complete for group 17. मैम वो सॉल्यूशन का भी पूछना है. अभी पूछना है? हाँ मैम आपके ऊपर है. आपको छोटा है कि ज्यादा है? एक दो क्वेश्चन ही है मैम. ओके ठीक है, मैं पहले होमवर्क दे देती हूँ. Yes, both students and CET students both will make proper notes and you will study and come up. See, this is a theory chapter, so you have to study it and come, because I am going to take oral in next lecture. जो भी आंसर्स जिसको भी नहीं आएगा करने के लिए, I'll not allow you for lecture. Now for CET students,
Page number 516 and 517. मैम Yes. अभी आप कोई न्यू टॉपिक कराओगे पी ब्लॉक का? No. ओके इसमें टॉपिक वाइज नहीं है क्वेश्चंस. तुम लोग को समझ में नहीं आएगा. एनीवेज यही है सिर्फ होमवर्क. Study it and come, all of you. I am going to take oral in next lecture. और वो भी सुबह सुबह लूंगी मैं 7 o'clock oral. So be prepared and come, all of you. We have lecture when on Saturday, ना? मिस फ्राइडे को है शायद. फ्राइडे का Friday आज रिप्लेस हुआ है. दोनों दिन है, फ्राइडे सैटरडे. हाँ, फ्राइडे का लेक्चर मैंने आज लिया है तुम लोग का. फ्राइडे you will be having maths lecture MSP. My lecture will be on Saturday. ओके मैम. ओके. हाँ, तो तनुष क्या? मैम सीईटी का जो होमवर्क था जो आपने दिया था 516 517 वो करना है कि नहीं? नहीं करना है क्योंकि सब क्वेश्चंस Okay. मिक्स है. टॉपिक वाइज नहीं है क्वेश्चंस. तो सिर्फ नोट्स करना है ना मैम? यस. ओके मैम. और पढ़ना है उसको ओरल के लिए. नेक्स्ट लेक्चर हाँ मैम. पूछो जल्दी. तनुष क्या? मैम टेस्ट और ग्राफ में थर्ड क्वेश्चन में डाउट है. कौन सा टेक्स्ट बुक का थर्ड क्वेश्चन? मार्वेल टेस्ट और ग्राफ थर्ड सॉल्यूशन. पेज नंबर बताओ ना. 318 मैम. बट ये क्यों चैप्टर अभी तुम लोग पढ़ रहे हो? यू हैव आपने होमवर्क दिया लास्ट क्लास थर्मोडायनामिक्स और सॉल्यूशंस टेस्ट और ग्राफ करने को. अच्छा, ओके. टेस्ट योर ग्रास्प का कौन सा क्वेश्चन? थर्ड. Which of the following 0.1 molar aqueous इसमें मैम ये पूछना था कि वैन हॉफ फैक्टर को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे कि मॉलिक्यूलर वेट को. No, you have to do it by Van Toff's method. So you can skip this question because it is reduced. ओके मैम. मैम और 16th क्वेश्चन में डाउट है. हाँ, क्या डाउट है इसमें? मैम मैंने ना इसको अभी मैंने 60 ग्राम को डेंसिटी ऑफ वाटर से ये किया सो मुझे मिल गया उसका वॉल्यूम विच विल बी 60 ml है ना मैम. तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 1000 किया न्यूमरेटर में तो आंसर मुझे 657 पॉइंट समथिंग आ रहा है बट इधर 6.57 के इसमें बता रहे. तुम्हें कौन सा ऑप्शन आया? मैंने मल्टीप्लाई बाय 1000 किया ना तो मुझे एक्चुअली 657 के इसमें आ रहा है बट पॉइंट अलग इस पोजीशन. ओके, मैं चेक करती हूँ. मतलब they haven't multiplied by 1000 to convert it into liters. No, you have वो 60 ml ही आएगा. This will be 60 ml only because it is mass is in grams. So it Yes, will be, ma'am. so this will be multiplied by 1000. Is 0.0821. टेम्परेचर कितना आता है? 287 ना? 287. आ रहा है तनुष आंसर 6.54 आया मुझे. हाँ मैम, I got my mistake. तुम्हें 8.3
हाँ 8.31 मैम, दिया है यार। हाँ हाँ, आर कैसे 8.31 लोगे? नहीं वो मैम थर्मोडाइनमिक्स करके थोड़ा उसका आदत एक हो गया मिनट तो। एक मिनट हाँ बोलो। मैम वो थोड़ा थर्मोडाइनमिक्स में 8.314 दिया ना तो फिर वो कंफ्यूज हो गया। हाँ वो तो हमेशा यूनिट्स देखने का ऑप्शन में हाँ मैम, एटमॉस्फेयर है ना, सो विल यूज वो 0.6। थर्मोडायनेमिक्स में मेरे को भी डाउट है वो होमवर्क में। पूछो ना। मिस नाइन्थ वाले में और 12th वाले में कंफ्यूजन है। 9th वाले में कौन सा क्वेश्चन? थर्मोडायनेमिक्स का? हाँ थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट और ग्राफ। 9th में क्या बोला है? रेफ्रिजरेटर डोर इज ओपन देन रूम, इसका करेक्ट आंसर है रूम गेट्स हीटेड। ओके, अगर तुम रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन करोगे तो क्या होगा? बाहर का सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा? अंदर जाएगा ना, हीट फ्रॉम सराउंडिंग विल एंटर द सिस्टम एंड रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो मशीन जो है, मोटर जो है वो मोर फास्ट इट विल स्टार्ट वर्किंग टू डिक्रीज द टेम्परेचर, तो उससे मोटर हीट होगा हीट ज्यादा रिलीज हो। एंड मिस हीट। लेकिन उसमें ना दो ऑप्शन दिए और उसमें ये भी दिया है कि या तो द रूम विल गेट हीटेड और द रूम माइट नॉट बी अफेक्टेड, और ये दोनों राइट आंसर में दिए। हाँ तो वही, अगर तुम्हारा रूम छोटा है, इफ द रूम इज स्मॉल देन इट विल गेट हीटेड, बट Heated. अगर तुम्हारा रूम काफी बड़ा है तो उसपे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो Oh. हीट क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर? ओके मिस, और एक कैन यू आल्सो सॉल्व ये अपना 30 सेकंड वाला मिस टेस्ट इससे और पहले ग्राफ? 12th वाला सॉल्व करो ना। हाँ 12th वाला है an मिस उसमें भी isolated 2 system is आंसर है। that system in which there is no exchange of energy and mass ना, so it is D option। 12th का आंसर D है, ओके मिस। क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा दोनों भी एक्सचेंज नहीं होता है, नॉट मास नॉर एनर्जी, बट यहाँ पे A एंड D दिया है, बट अगर A एंड D में हम लोग देखेंगे तो D इज मोर रेलिवेंट ऑप्शन। ओके, यस यस 31st ना जय? मिस 30 सेकंड। मिस उसमें ना 3 रिएक्शन दिए हैं। एक तो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन है, उसके बाद ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, और दूसरा एक वो है जिसमें CH3 एसिटिक एसिड जो है उसका कंबशन हो रहा है। अभी ये तीनों दिए हैं और उसमें बोला है कि फॉर्मेशन ऑफ जो एसिटिक एसिड होगा उसके लिए एनर्जी क्या होगा। मुझे रिएक्शन जो है वो तीनों को डबल और रिवर्स करके मुझे बराबर आ रहा है, लेकिन जो एंथैल्पी जो है वो उसका राइट आंसर नहीं आ रहा। एक मिनट। हाँ, सो फर्स्ट रिएक्शन को क्या किया? मल्टीप्लाई बाय 2 किया ना? यस, मल्टीप्लाई बाय 2 किया ना फर्स्ट वाला रिएक्शन। सेकेंड वाले को भी O2 वाला मल्टीप्लाई बाय 2। एक मिनट, सॉरी। फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3। आर यू श्योर कि फर्स्ट वाले रिएक्शन 2 से मल्टीप्लाई नो होगा? नो 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 नो, आई कैंसल्ड इट। ओके। 2 कार्बन। यही आता है ना जय तुम्हारा इक्वेशन? फॉर्मेशन ऑफ
एसिटिक एसिड का? मिस मुझे एक्चुअली थोड़ा अलग आया, मुझे नो, C+2H2 + CO2 आया। नो, यही आना चाहिए तो ही तुम्हारा करेक्ट आएगा। दिस इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। सो Product इसके should be अकॉर्डिंग, always 1 mole. No? हाँ, फॉर्मेशन शुड बी ऑलवेज 1 मोल. So this will be my first equation will be multiplied by 2. Second will be also multiplied by 2. और थर्ड को हम लोग थर्ड उल्टा इक्वेशन करेंगे। रिवर्स होगा। अभी चेक करो, तुम्हें बराबर आएगा। ओके मिस। मैम जब भी बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे तो वो जो वैल्यू है उसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा ना? मींस मुझे समझा नहीं तुम्हारा क्वेश्चन, किधर है ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन? अभी मैम क्वेश्चन 29 देख लो ना सॉल्यूशन का। टेस्ट और ग्राफ में 29। हाँ, बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है। Elevation of boiling point of solution of 10 gram of binary electrolyte in 10 grams of water is. नॉर्मल मेथड से देखेंगे मैम, तो सब हो गए। कैंसल आउट हो जाएगा। Delta TB is equal to KB into M. हाँ मैम। So KB will be delta TB upon M, na? यस। So delta TB is 10 grams, molar mass is 100 into 100 grams. into 1000 वो सब कैंसल हो जाएगा ना मैम? हाँ, तो टीबी इसके भी आ रहा है, बट देन बाइनरी बोला वो लोग। इलेक्ट्रोलाइट है ना, सो ये I के भी आएगा, so that's why it is 2. ओह ठीक है मैम, समझा। तो वो तुम्हारा I वाला तुम्हें नहीं आएगा क्वेश्चन, तुम्हें ठीक है सिर्फ मैम। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे, तुम्हें इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं आएंगे। मैम क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे टाइप के और पहले किए हैं हाँ। हमने, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ओके मैम, थैंक यू। इट्स डन ना? यस यस मिस। ठीक है, सीईटी के लिए अभी मेरे दिमाग में होमवर्क आया है, मैं पीडीएफ भेज रही हूँ सॉल्व करने के लिए। आई एम सेंडिंग यू द पीडीएफ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टू सॉल्व। ओके मैम। बाय मैम, थैंक यू। बाय बाय। Bye, ma'am.